Hello and welcome to our ethics class. So आमे last class रे emotional intelligence विषय पढ़ुଥିଲେ. So due to some technical problem आमर abruptly class stop हो जाइथिला. तो last class रे आमे जोटु छाड़ी दिले आमे सेठु आरंभ करिबा. Right? तो हम last class रे पढ़िथिले what is emotional intelligence. आमे देखिथिले प्रथमे what are emotions. Emotions are nothing but inner feelings of a human being, right? तो आमे देखिथिले what are positive emotions such as love, gratitude, satisfaction, and negative emotions such as greed, anger, jealousy, etc. तापर आमे देखिथिले emotional intelligence कोन. Emotional intelligence is the ability to understand the emotions of oneself and that of others. That is emotional intelligence, right? तो तापरे आमे देखिथिले what are the major attributes of emotional intelligence जोथरे में पढ़िथिले self awareness, social awareness, self regulation, empathy and motivation, right? Next आमे देखिथिले emotional intelligence in governance रे emotional intelligence रो role and how emotional intelligence has evolved as a concept in governance, right? तो मु तुमको कहिथिली that emotional intelligence was never considered a valuable thing in governance. In earlier times जोठी मु तुमको कहिथिली about the scientific management theory of F.W. Tyler. I had told about the scientific management theory of F.W. Tyler. So Tyler का जो total focus थिला that was on increasing productivity, maximization of productivity, right? And there was no consideration for human emotions or job satisfaction or interpersonal relationships in this scientific management theory. तापरे there was Weber. Weber मध्य कौन थे? Weber was also a strong supporter. Weber was also a strong supporter of this scientific management theory, right? से मध्य विश्वास करुथिले हायरार्की रे, से मध्य विश्वास करुथिले चेन ऑफ कमांड फॉलो करिबारे, से मध्य विश्वास करुथिले रूल्स लॉज रेगुलेशन रे एवं एठी मध्य ह्यूमन इमोशंस को कंसीडर करा जाय नथिला. ता परे after some time there was a theory given by Elton Mayo जहाँ को कहा जाउथिला human relations theory. Human relations theory was given by Elton Mayo. And Elton Mayo कहूथिले that man is not a machine. Man गोटे machine नुहे. Okay. And productivity at workplace depends on interpersonal relationship among the co-workers, relationship between your superior and your subordinates. Okay, so productivity raw, there are many human factors are there that was recognized by Elton Mayo in his human relations theory. जोठी scientific management theory रे कहा जाउथला man is merely a cog in the machine. Say in contrast to that Elton Mayo तांकर human relationship theory रे कहिथिले that man is not a machine. Man is not a machine, right? So प्रथम थर पे ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी बाय एल्टन मायो रे ह्यूमन इमोशंस को रिकॉग्नाइज करा जायतला एज अ फैक्टर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन.
अच्छा ए ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को फर्दर आगो को नहीं थिले डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन का विषय में पूर्व भी मेंशन करिछि। सो डेनियल गोलमैन इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तांको फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एथि पे कहा जाए बिकॉज द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस वाज कॉइन्ड बाय डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन ही से व्यक्ति जे इमोशनल इंटेलिजेंस जो टर्म अछि ताको इन्वेंट करिथिले। ओके से गोटे बुक मध्य लिखिथिले। से बुक रो भी ना थिला इमोशनल इंटेलिजेंस। बुक रो ना थिला इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। तो आमे देखिले एल्टन मेयो तांको वर्क को फर्दर आहुरी रिफाइन करथिले डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन को परे आउ जण थिले हमरो मेयर एंड सैलोवे। मेयर एंड सैलोवे कर मध्ये गोटे मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस अछि। सो ऑल दीज आर द ग्रेट कंट्रीब्यूटर्स towards the study of emotional intelligence, right। तो एटा हमर थिला इमोशनल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस। ओके वर्तमान आमे देखिबा नेक्स्ट आमे देखिबा द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस हमर जीवन रे एडमिनिस्ट्रेशन रे गवर्नेंस रे पर्सनल लाइफ रे आउ पब्लिक लाइफ रे what is the role of emotional intelligence that will see। किंतु ता पूर्वरु आमे टिके जानि रखिबा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे इमोशनल इंटेलिजेंस को केमते मेंशन करे जाय छी। ओके इमोशनल इंटेलिजेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ओके आमे या पूर्वरु जते सब पढले Tyler तो obviously he was not related to emotional intelligence, but Elton Mayo, Daniel Goleman, Mayer Salovey, these are all Western thinkers, right। तो इंडिया रे कोन इमोशनल इंटेलिजेंस विषय रे किछि कोहा जाय नाही कि, राइट। सो आमे जदि देखिबा ताले सबठो बड़ प्रमाण इमोशनल इंटेलिजेंस रो आमे देखिबा को पाऊ इन भगवद गीता। भगवद गीता रे गोटे टर्म आसे जहा को कहा जाय स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ की स्थित प्रज्ञ होची एन इमोशनली स्टेबल पर्सन जे खुशी रे बहुत खुशी हे जाय नहीं किबा दुख रे भांगी पड़े नहीं ताकू ही श्री कृष्ण कहंती स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ से अर्जुन को कहते श्री कृष्ण अर्जुन तुम्हें स्थित प्रज्ञ हुआ, राइट। तापरे आउ गोटे टर्म आसे भगवद गीता रे व्हिच इज कॉल्ड एज निष्काम कर्म। निष्काम कर्म गण निष्काम कर्म होची डिजायरलेस एक्शन। डिजायरलेस एक्शन। अच्छा जेते बेले भी आमे गोटे काम सहित गोटे डिजायर अटैच कर दो तार रिजल्ट सहित गोटे डिजायर अटैच कर दो गोटे इच्छा। ओके जते बेले डिजायर आमे अटैच करू सेते बेले कोन हुए ना जदि डिजायर फुलफिल हैला नहीं, ओके जदि रिजल्ट आमो अकॉर्डिंगली आसिला नहीं ताहेले कोन हुए मन रे एंगर आसे, क्रोध आसे एंड एंगर लीड्स टू डिल्यूजन। एंगर डिल्यूजन क्रिएट करे, राइट। डिल्यूजन रो कोन हुए ना we lose control of ourselves and we lose our ability to judge between what is right and what is wrong, right। so desire रो एते सबु जिंस होउजी, राइट। तो तेणु करी भगवद गीता को निष्काम कर्म कथा। भगवद गीता को है दैट कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आमर अधिकार केवल कर्म उपरे अछि कर्मर फल उपरे नहीं, राइट। एटा होछि निष्काम कर्म। अच्छा भगवद गीता व्यतीत आउ किछि मध्य आमर इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे इमोशनल इंटेलिजेंस कथा कहै जाय छी। जदि हम कहिबा बुद्धिज्म रे अछि गोटे मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग बा द मिडल पाथ। ओके
it was propounded by Gautama Buddha. Gautama Buddha जो middle path रो कथा कहती से कहती to avoid extremes. Okay, extremes को avoid करिबा एवं गोटे समतार भाव नहीं कि middle path रे चलिबा. Okay, that fosters that enhances emotional intelligence, that gives power to emotional intelligence. Okay, you are always in control of yourself. Okay, so तांकर गोटे बुद्धांकर टीचिंग्स को नहीं कि गोटे धम्मपद बोली there is a book compilation, there is a book जो थरे बुद्धांकर टीचिंग को कंपाइल करा है धम्मपद से थरे कहा जाय छी the greatest conqueror is the one who conquers himself. जे निज ऊपर विजय हासिल करिछि से ही सबठारु बड़ विजयी. Okay, the biggest conqueror. So all these things are related to emotional intelligence. Okay, जोटा हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे देखिले, राइट. ठीक अछि. तापर हमें देखिबा व्हाट आर द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस रो रोल कोन अछि. प्रथमतः देखिबा हमें इंडिविजुअल लेवल. इंडिविजुअल लेवल रे whenever a person is emotionally intelligent ताले तार कोन हबो तार मेंटल हेल्थ ठीक रहिबो. वर्तमान समय रे हमें मेंटल हेल्थ विषय रे बहुत कथा बार्ता करूछु, राइट. मेंटल हेल्थ विषय रे कथा बार्ता करूछु एंड ता छडा हमें देखिबा जे कहा जाउची that mental health issues are the silent pandemic. It is the silent pandemic. Okay, almost everyone is suffering from some or other kind of mental health issues. Okay, ता छडा आमे जदी इंडिया रे NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रो डेटा देखिबा ताहले मध्य there is an increasing trend in suicide. Okay, suicide ro increasing trend ame देखिबा को पाउछे, right. So all these are the manifestation of deteriorating mental health. A mental health deteriorate हेबार गोटे प्रमुख कारण होची most of the people, majorly the young people, are vulnerable and they are not emotionally intelligent. They are not being able to regulate their emotions, rather they are being regulated by their emotions, right. So emotional intelligence fosters mental health when one recognizes one's emotions, when one knows how to regulate his emotions and he recognizes the emotions of other person too, then he becomes an empathetic human being, a compassionate human being, an emotionally intelligent human being. Okay, and that aids to his mental health, right. Secondly, work life balance. Vartaman samay I am coach that many people are overworked, overburdened. So if one is emotionally intelligent and he has the capacity, the ability to balance both the work life and the personal life, the public life and the private life, right. तापर असला self motivation. Okay, self motivation. Whenever one is emotionally intelligent, he is naturally motivated. आम जदि एग्जांपल देखिबा ताले मलाला यूसुफजाई के विषय आम समस्त जानिछे, राइट. से केमते एडवर्स परिस्थिति रे मध्य गर्ल्स एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन प्रमोट करिया पे काम करथिले. से जो मोटिवेशन आसुथिला फ्रॉम वेयर इट वाज कमिंग फ्रॉम द सेल्फ ओनली, आत्म प्रेरणा, राइट. आमे आमे ओडिसा रे जने लीडिंग को जानिथिबा तांको पद्मश्री मिलिथिला. तांको ना हला कमला पुजारी. कमला पुजारी को पद्मश्री मिलिथिला फॉर व्हाट? फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग जने ट्राइबल महिला थिले, जने ट्राइबल महिला एवं ऑर्गेनिक फार्मिंग रे तांकर कंट्रीब्यूशन पई तांको पद्मश्री पुरस्कार मध्य मिलिथिला. तो ये जो काम से माने करूछंती, from where does they get the motivation? It is from the self only, because it aligns with their values. ସେମାନେ ସେ କାମ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? because ତାଙ୍କର value ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ର purpose ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, and it comes from within.
ओके अच्छा रिसेंटली आमर जो नोबेल पीस प्राइज पाइथिले मारिया कुरिनो मैचाडो राइट से तले वेनेजुएलन ऑपोजिशन लीडर राइट शी इज अ लेडी ओके से गांधी जी गोटे गोटे कोट को से ट्विटर रे ट्वीट करथिले जोटा कुहे द कोट सेज दैट everything that you will do will be insignificant but it is important that you do it okay तार माने कौन तुम जहाँ भी करिबो सेटा बहुत इनसिग्निफिकेंट बहुत क्षुद्र हो किंतु इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू डू इट व्हाई बिकॉज इट अलाइन्स विथ योर वैल्यूज बिकॉज इट गिव्स यू अ पर्पस इन लाइफ ओके दैट कम्स फ्रॉम सेल्फ मोटिवेशन राइट सो मु भाबुची तुमे माने बुझी परिथिबो द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एट इंडिविजुअल लेवल हाउ इट enhances mental health, it fosters work life balance and it provides self motivation okay तापर हमें देखिबा how emotional intelligence help in maintaining a relationship with public as public servant okay whenever a person is emotionally intelligent जेतेबेले मनिष गोटे emotionally intelligent person होची सेतेबेले से कोन करूची ना ता पाखरे देखा जीवो टॉलरेंस माने हला सहिष्णुता ता पाखरे देखा जीवो एम्पैथी माने समानुभूति ता पाखरे देखा जीवो इंटीग्रिटी माने सत्यनिष्ठा ओके all this जेतेबेले से तार पब्लिक रिलेशनशिप रे टॉलरेंस एम्पैथी आ इंटीग्रिटी शो करिवो सेतेबेले डेफिनेटली से गोटे विश्वसनीय विश्वासर पात्र हे जिवो तार क्रेडिबिलिटी बढ़ी जिवो ओके पब्लिक ट्रस्ट इंक्रीज इन पब्लिक ट्रस्ट राइट ता छड़ा आमे देखिबा बेटर कम्युनिकेशन ओके कम्युनिकेशन केवल कहिबा लिखिबा नुहे कम्युनिकेशन इज also being a good listener कुहा जाए the major part of communication is hearing what is not said जहा कुहा जाए नहीं ताको मध्य बुझी जिबा होची गोटे communication रो major part okay and that is possible only if a person is emotionally intelligent hearing what is not said right तापर असला conflict management okay as public servants you will be in the responsibility to manage conflicts and एवं effective conflict management केवल सेतेबेले हे परिबो जेतेबेले तुमे human relations को human emotions को बुझी परिबो because कुहा जाए जे all governance is governance of the people okay all governance is the governance of people and all service is the public service right so tenu human relations are DNA of governance okay governance ro DNA hochi relations okay so you will be a better conflict manager ता छड़ा grievance redressal जहार जेतेबेले कोनसी grievance आसुची कोनसी अभियोग आसुची ताको मध्य तुमे empathetically ताको मध्य तुमे tolerantly and with utmost responsibility you will deal with that okay and that will lead to also emotionally intelligent people will take care of inclusivity in governance inclusivity mane kona that no one is left behind everyone is included in the process of governance okay and all these will lead to the final goal of good governance all these will result in the fruitful the successful outcome which is good governance so I hope तुमे ए दुईटा जिनस बुझी पारथिबो at individual level and in relation with public emotional intelligence रो कोन रोल रहिछि all right अच्छा आमे देखिबा वर्तमान
इमोशनल इंटेलिजेंस को आमे केमती डेवलप करबा हाउ टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा आमे गोटे टर्म जानिथिबा जाको कहै जाय आईक्यू आईक्यू माने कोन आईक्यू माने होची इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इंटेलिजेंस क्वोशिएंट अब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज मोस्टली genetic mostly no it is totally genetic okay you are born with this you are born with a certain level of intelligence quotient then the Einstein alle Newton alle they were born with a very high level of IQ okay so it change habata very less likely ki IQ ame बढ़े दबा कहर okay but emotional intelligence is a thing जोड़ा को ame with time with effort we can increase it we can develop it okay so जेहेतु emotional intelligence रो एते बड़ा रोल अछि right so it is important कि हम जानिबा how to develop emotional intelligence right so emotional intelligence हमें केमते develop करबा प्रथम तो हला parenting okay everything begins at the level of family रो level रही सब किछि आरंभ हुए charity begins at home okay and family is the primary institution of socialization a family रे भी सबटो important हला parenting is the most important thing right so parenting is very important in case of generating self-awareness, self-regulation, social skills, okay, empathy, motivation, अच्छा सब किछि can be fostered if the parenting is right, okay. So that is a model of parenting जहाँ को है Montessori parenting, okay. तुम्हें सुनी थी कि मैं सुनी न थी okay. Montessori parenting एथरे कोन को है ना the child is treated with respect okay छुआ डा बोली तुम ताको केमते बे ट्रीट करि परिबो नाही you should treat the child with respect with dignity okay so Montessori parenting madhya gote model of parenting which is capable of generating and developing a high level of emotional intelligence in the child right इगला parenting तपर secondly हमें देखिबा habitual self introspection okay अभ्यासगत भाबरे हमें कोन करबा self introspection माने हला आत्म अवलोकन निजो को निजे देखिबा निजर एक्टिविटी निजर थॉट निजर एक्शन निजर स्पीच को देखिबा ओके तो सेटा बध्य करिवार विभिन्न प्रकार वे अछि जेमते तुमे कंटेम्पलेट करूछ गोटे जगह बसुछ यू जस्ट इमेजिनिंग कि तुमे कोन एक्शन कलो whether it was right or wrong whether in future it should be corrected or not right that is contemplating over your actions okay secondly आमे आम भितर बहुत जण कोन करंती ना journaling करंती माने डायरी रे मेंटेन करंती whatever their daily activities are okay so journaling is also a type of habitual introspection आत्म अवलोकन रो गोटे भलो माध्यम होची journaling करबा डायरी लिखिबा right तापर असला इमोशनल लिटरेसी माने हला साक्षरता अच्छा वर्तमान समय रे हमें केवल लिटरेसी बा साक्षरता कथा कहू नाही आमे कहूचे आमे तार वेरियस मैनिफेस्टेशन विषय कथा होचे जेमति कि डिजिटल लिटरेसी जेमति कि आउ गोटे टाइप रो कोन लिटरेसी हां फाइनेंशियल लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी ओके ए सब विषय को नेकी मध्य आम भितर अवेयरनेस बहुत बढ़ी चललानी ओके तो सेठी वर्तमान समय रे मेंटल हेल्थ कंडीशन आउ बाकी सब एक्सटर्नल वर्ल्ड रो चैलेंजेस को देखि कि इट हैज बिकम वेरी इंपोर्टेंट दैट आमे इमोशनल लिटरेसी को मध्य सेति कि प्राधान्य बा सेति कि इंपोर्टेंस दो राइट सो इमोशनल लिटरेसी रो रोल मध्य एठी बढ़ी जाय इमोशनल लिटरेसी किए दबो ऑब्वियसली फैमिली दबो ऑब्वियसली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दबो मेजरली
राइट तापर आसला रिलीजियस टीचिंग अच्छा रिलीजियस टीचिंग मध्य हमर इमोशनल इंटेलिजेंस विषय बहुत भल ज्ञान हमको दे थांती अच्छा फॉर एग्जांपल जमते मो भागवत गीता कथा कहिथिली ओके भगवत गीता कथा तुमको कही भगवत गीता रे श्री कृष्ण कहते अबाउट स्थित प्रज्ञ ओके द स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी समभाव राइट देन तापरे आसीब निष्काम कर्म स्थित प्रज्ञ तापरे बुद्धिज्म रो मध्यम मार्ग तापरे जेन फिलोसफी गोटे अछि दैट इज अ जेन एटा गोटे स्कूल ऑफ बुद्धिज्म ओके जेन कोन कुहे जेन रो फोकस हला कंप्लीटली ऑन माइंडफुलनेस mindfulness mindfulness and living in the present moment okay past रो worry एवं future रो anxiety को साइड रखिगी living in the present moment okay that is the main teaching of the Zen school of Buddhism right so this religious teaching मध्य हमको इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करिबारे हेल्प बहुत मात्रा रे करछि then asla meditation and yoga okay meditation and yoga are also very much potent factors in developing emotional intelligence meditation hame samste janiche various kinds of meditations are there and yoga is a gift of India to the world ata choda hame 21st June re we are celebrating international yoga day right so meditation and yoga योगा योगा रो वेरियस डेफिनेशंस रही छै जेमते कि वर्तमान समय कोन करे जाउछि ना केवल फिजिकल एक्सरसाइज को योगा रो गोटे नैरो डेफिनेशन कर दिया जाय छै दैट योगा मींस दैट डूइंग द फिजिकल एक्सरसाइज बट दैट्स नॉट द थिंग योगा रो there is a deeper meaning okay there is a deeper meaning it is existing in harmony with the whole existence okay केवल गोटे आइसोलेटेड पर्सन हिसाब रे न बंचिकी living in harmony with the existence that actually is yoga okay तापर असला another method of developing emotional intelligence is diversion divert करिबा okay कहंती ना आमे जते बेले बहुत दुख रे थाउ किसी चिंता रे थाउ तो आमर आख पाकर आमर लव्ड वंस कहंती तो टिके चली के आसे टिके बुली के आसे टिके माइंड टिके डाइवर्ट हो दैट इज डाइवर्जन 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 बहुत प्रकार हे परिबो जेमति कि आपण तुम जदी एंजाइटी रे अछो देन तुम जदी डीप ब्रीथिंग करछो दैट काम्स योर नर्व्स ओके तुमको इमोशंस रो ओवर पावर हबारो तुमको टिके that gives you relaxation also listening to music तुम जदी soothing music सुनो then also your mind gets diverted ता छड़ा hitting the gym अच्छा most of the young people not most but in many cases you must have seen whenever there is a heartbreak okay heartbreak then the person hits the gym so that could a bhala way actually to regulate your emotions to divert your emotions to in a positive way channelizing your emotions in self improvement okay this is diversion all right then ame dekhiba next factor kon achi okay emotional intelligence रे आउ मध्ये हेल्प करे हमको इमोशनल इंटेलिजेंस रे कोन इफ वी हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर जदि हमर भलो अछि ताहले बहुत गुडे इमोशनल टर्मोइल को हमें बहुत इजीली पास कर दे पारेबा राइट इमोशनल इंटेलिजेंस रो बहुत टर्मोइल को हमें इजीली पास कर दे पारेबा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर विषय रे गोटे स्टोरी कहूची दो मन को सो आमे समस्त जानिथिबा अबाउट अलेक्जेंडर द ग्रेट ओके अलेक्जेंडर को जे विश्व विजयी किंग से थिले राइट सो से समय डायोजेनस बोली जने फिलोसोफर थिले हु वाज बेसिकली अ फकीर तांगर कोनोसी चिंता नथिला तो ग्रीक रो से फिलोसोफर थिले तांगर ना थिला डायोजेनस ओके सो डायोजेनस कर बहुत भलो ना थिला ग्रीस रे ओके एज अ फिलोसोफर एज अ थिंकर एज अ गुरु
teacher, right? So Alexander थरे जाइथिले डायोजेनस को मीट करबा पई, ओके। सो से जतबे गले डायोजेनस को पाखकु कहले डायोजेनस तुमर बहुत प्रशंसा हम सुनी छी, अच्छा तुम्हें कह व्हाट कैन आई गिव टू यू, मु होचे अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड आई हैव एवरीथिंग, तुम्हें जहाँ चाहिए मु तुमको दे परिबे, टेल व्हाट अलेक्जेंडर कैन गिव टू यू, ओके। तो सेते बेला डायोजेनस कहते दैट अलेक्जेंडर तुम्हें तुम्हें जस्ट टिके साइड है कि ठिया ही जाओ, तुम्हें टिके मो रास्ता रू हटि जाओ, कारण जो सूर्य किरण आसुची मो देहरे पडुची मते भल लागुची, राइट? सो दिस इज टेकिंग लाइफ इन अ लाइट वे, ओके, नॉन सीरियसनेस, ओके। जीवन को गोटे हल्का दृष्टि रे देखि परिबा, दैट इज गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तापर असला रोल मॉडल, अच्छा किछि रोल मॉडल किछि व्यक्ति आम पूर्वर वर्तमान समय किछि किछि स्टैंडर्ड सेट करके जाइछंती ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, जेमती मु बहुत समय कहे एम एस धोनी को कथा, ओके। एम एस धोनी जहाँ को आम कैप्टेन कूल मध्य कहू, ओके, लविंगली वी कॉल हिम एज कैप्टेन कूल बिकॉज ऑफ हिज इमोशनल इंटेलिजेंस। तुम्हें को केबे भी बहुत बेसी दुख कि बहुत बेसी खुशी रे देखि नथियो, दैट इज emotional intelligence of MS Dhoni, okay, always in a state of equanimity, okay, samabhava, right? तापर असला goal orientation, what is goal orientation? अच्छा, suppose you are working, okay, you are a civil servant and you are working and you have a target to fulfill, you have a task to do, अच्छा, say intelligent way, okay। तापर असला sensitivity training, sensitivity training कौन? Sensitivity training is the training about it is the training about creating sensitivity, संवेदनशीलता रो सृष्टि करिबा किंबा संवेदनशीलता को डेवलप करिबा अबाउट डिफरेंट socially different people or culturally different people, अच्छा एमानक प्रति sensitivity create करिबा, that is sensitivity training, जेमति कि gender sensitivity, okay, जेंडर सेंसिटिविटी, ओके। और जेंडर सेंसिटिविटी वर्तमान समय रे केवल नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स वुमेन, ओके, इट इंक्लूड्स अ होल स्पेक्ट्रम जेमति LGBTQ, राइट? इट इज अ होल स्पेक्ट्रम, राइट? सो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। तापर असला कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट है सर्टेन गाइडलाइंस which directs the behavior of the पब्लिक सर्वेंट, ओके। जते बेला हमें कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स हिसाब रे बिहेव करो, देन नेचुरली व्हाट हैपेंस that our conduct becomes ethically sound, our judgments becomes ethically correct, right? So these are the ways where by which we can develop emotional intelligence। अच्छा, एठी मु कहबा को चाहूची that इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करिबारे गोटे बहुत मेजर रोल अछि कहारो ना मीडिया रो। मीडिया हैज अ मेजर रोल टू प्ले, ओके, रोल ऑफ मीडिया, okay, and there is a very famous saying that what the eyes do not see the heart doesn't grieve about। तो पर्सन मानक भितरे ह्यूमन मानक भितरे हमर सेंसिटिविटी बा टॉलरेंस बा एम्पैथी, ओके, ताको जनरेट करबा पई मीडिया रो गोटे रोल प्ले करो गोटे मेजर रोल अछि because it shows the reality of life। अच्छा, आमे आमे देखिथिबा सत्यमेव जयते बोली गोटे टीवी शो आसुथिला, तार सत्यमेव जयते बोली टीवी शो आसुथिले जाको आमिर खान होस्ट करुथिले एवं एथिरे से मनीष जीवन रो कहानी कहउथिले, ओके, ओके। सो दिस वाज एन अटेम्प्ट टुवर्ड्स making people aware of human emotions, various kinds of human emotions, right? So role of media is very important, okay।
तो एथि सहित आमे इमोशनल इंटेलिजेंस को गोटे ओवरऑल वे रे कवर करिलु सो मु भाबुछि तो मान को गोटे फेयर आइडिया हिथिबो अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस सो नेक्स्ट क्लास रे आमे पढिबा अबाउट मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स ओके ठीक अछि।